You are now unmuted. Hello. Hello. Good morning. कैसे हैं आप सब लोग? ओके। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें 2 या 3 टॉपिक्स आते हैं मोस्टली। ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो की टॉपिक्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज मोनोटोनिसिटी। ओके। तो कोई बताएगा आप में से मोनोटोनिसिटी का मीनिंग क्या होता है? द फर्स्ट टॉपिक इज मोनोटोनिसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? मोनोटोनिसिटी का मीनिंग होता है सेम काइंड ऑफ बिहेवियर। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा। ठीक है। सेकेंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे लाइक लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ओके, लोकल मिनिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। Other than that, some geometric problem based on maxima minima. Or we can say there are some practical problems or geometrical problem. Based on maxima and minima. ये जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, यहाँ से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था पहले बोर्ड के अंदर। ठीक है। एक मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। सो दिस टॉपिक इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में हम देखेंगे कि जैसे हमने कुछ पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किया था, टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए पैराबोला, तो वही चीज़ें हम दोबारा से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस की हेल्प से रिराइट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हाउ टू सॉल्व यूजिंग कैलकुलस। उसके बाद फोर्थ पार्ट में कुछ थ्योरम्स आती है लाइक रोल्स थ्योरम। ठीक है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ठीक है। रोल्स थ्योरम। एंड फिफ्थ पार्ट में कुछ अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली जेई वाले सेक्शन में तो नहीं आते हैं, लेकिन CBSE वाले सेक्शंस में आते हैं, बोर्ड वाले सेक्शन में। ठीक है। मोस्टली तो ये कुछ कंटेंट है जो हमें इस टॉपिक में 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कि किस टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ऑल राइट। तो चलो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मोनोटोनिसिटी।
तो इसका मीनिंग, लेटरल मीनिंग अगर मैं बात करूँ तो इसका जो लेटरल मीनिंग होता है बाय डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मीनिंग होता है सेम काइंड ऑफ बिहेवियर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेम काइंड ऑफ बिहेवियर हियर इन टर्म्स ऑफ मैथ्स और फंक्शंस? हमारा यहाँ बिहेवियर से मीनिंग है आइदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। पर्टिकुलरली वी आर डीलिंग विद फंक्शंस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हम बोल सकते हैं बिहेवियर से जो हमारा पर्टिकुलर मीनिंग है फंक्शन का, फंक्शन के इंक्रीजिंग होने से, आइदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो क्या आप मेरे को ये बात बता सकते हो कि कब हम किसी फंक्शन को प्रैक्टिकली ये बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, कब ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है? देखो, अगर हम बेसिकली इन चीज़ों को थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से समझना चाहें तो देखो, अगर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में हमारे पास दो कैटेगरी बनती है, एक तो इंक्रीजिंग काइंड ऑफ फंक्शन और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पार्ट हम मैं डिस्कस करता हूँ, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग ये हुआ, ठीक है, कि फंक्शन एक बारी किसी वैल्यू को अचीव करता है तो उससे डाउन नहीं आएगा। दैट मीन फंक्शन का जो ग्राफ होगा, जो प्लॉट होगा, कुछ इस तरीके का होगा। लाइक हम किसी भी एक्स के लिए बात करेंगे इसमें, जैसे मान लो हम यहाँ पे किसी एक्स के लिए बात करें, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज एक्स वन, ठीक है, और हम नेक्स्ट किसी और एक्स के लिए बात करें यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x2 है दैट इज ग्रेटर देन x1, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, fx2 दैट इज ग्रेटर देन fx1, वो कंटिन्यूसली उससे बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ इक्वलिटी भी नहीं होल्ड हो रही दो पॉइंट के लिए, ठीक है, कंटिन्यूसली फंक्शन चेंज कर रहा है, एक बार जो अचीव पॉइंट है उससे नेक्स्ट लेवल पे मूव कर रहा है फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो चलो सेकंड, अगर मैं इस टाइप के बिहेवियर की बात करूं, जस्ट वी से इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि लेट्स लुक एट द ग्राफ, कि फंक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर कुछ पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गया, फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, अपने लेवल से डाउन नहीं जा रहा है, एक बार जो लेवल अचीव किया, बट वो उस लेवल पे मेंटेन रख सकता है। दैट मीन यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो फंक्शन कंटिन्यूसली क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया किसी पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई x1 लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई x1 लिया मैंने, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई x2 लिया और यहाँ पे x3 लिया, ठीक है। तो अगर मैं आपको बिहेवियर चेक करने के लिए बोलूँ तो आप सिंपली यही बोलोगे कि x3 वैल्यू इज ग्रेटर देन x2 वैल्यू इज ग्रेटर देन x1 वैल्यू। ये पैटर्न है x की वैल्यूज के अंदर। अगर मैं यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे होगा fx3, यहाँ पे होगा fx2 और यहाँ पे होगा fx1, ओके। तो वी कैन से fx3 is equal to fx2, भाई सेम लेवल है, बट these are greater than fx1, ओके। सो इक्वलिटी वाला केस यहाँ अचीव हो सकता है, बट वो डाउन नहीं जाएगा। एक बार जो वैल्यू उसने अचीव करी है नेक्स्ट पॉइंट पे वो उससे डाउन नहीं जा सकता। तो इस तरह के बिहेवियर को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इंक्रीजिंग काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है।
अब अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस बात करता हूँ तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग कैटेगरी में है। ठीक है, तो अगर मैं वापस से यही दोनों ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर जो ग्राफ आया कुछ ऐसा आया, कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, और इंक्रीजिंग कैटेगरी के अंदर जो ग्राफ आया वो ऐसे बढ़ रहा था, फिर कहीं कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा, ऐसे कुछ पैटर्न का ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैलकुलस में तो ये बताइए कि इच पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की स्लोप चेक करता हूँ, इस कर्व पे यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप चेक करता हूँ तो इसकी स्लोप कैसी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज पॉजिटिव। कहीं भी चेक करेंगे तो हमें स्लोप क्या मिल रही है, बिकॉज एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, तो वी कैन से पॉजिटिव स्लोप मिल रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इस वाले सेकंड वाले फंक्शन के लिए, ये फर्स्ट केस है, और अगर मैं सेकंड केस के लिए चेक करता हूँ यहाँ पे, तो आप बताओ यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो इस केस में इस पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक के बीच में जो स्लोप है वो क्या होगी, जीरो हो गई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्लोप है डेट इज जीरो, दैट मीन्स वाई का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो हो गया। और यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें जो स्लोप थी, स्लोप में टेंजेंट की स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने एक डिफरेंस पाया, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ये कैटेगरी है, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, हम स्लोप को क्या बोल सकते हैं कैलकुलस के टर्म में, किसी फंक्शन का एफ डेस एक्स each point should be greater than 0, वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से कंक्लूजन निकालना चाहें इस सेकंड प्लॉट से, तो सेकंड प्लॉट से हम क्या बोल सकते हैं भाई, स्लोप कहीं पे पॉजिटिव है बट बीच में कहीं पे जीरो हो सकती है, जब फंक्शन क्या हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया किसी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एफ डेस एक्स दैट मीन स्लोप जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। दैट सिंपली मीन जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग काइंड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो वो बीच में कहीं कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो वी कैन से फंक्शन मे बी कांस्टेंट फॉर सम इंटरवल some values of x, in this case that is allowed. Okay, so this is the basic difference between increasing and strictly. ठीक है, तो similarly if we discuss about decreasing and strictly decreasing, now can you tell me the what is the basic difference between, सेम काइंड ऑफ थिंग। अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा तो उसका जो प्लॉट होना चाहिए वो कुछ इस तरह का प्लॉट होगा। ठीक है, अगर फंक्शन जो है हमारा, एक मिनट सॉरी, ओके, अगर देखो अब अगर हमारा फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग हुआ तो डिक्रीज करेगा, किसी पॉइंट पे आके कांस्टेंट करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट, इस तरीके से होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले केस की, सेकंड वाले केस की, तो इस केस में क्या होगा, जो प्लॉट है फंक्शन का वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता रहेगा, वो कहीं पे कांस्टेंट होने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर स्लोप के टर्म्स में फिर से बात करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे बताओ स्लोप कैसी है, स्लोप का मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग स्लोप अबाउट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट एवरी पॉइंट।
तो दैट इज सिंपली अवर एफ डेस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो स्लोप जो होगी टेंजेंट की, टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू क्या होगा, दिस एक्स एक्सिस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्लोप क्या थी, नेगेटिव वैल्यू थी, यहाँ पे पैरेलल हो गया तो स्लोप की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई 0 और यहाँ पे क्या हो गई नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके का एक पैटर्न है कि कहीं पे स्लोप नेगेटिव है और कहीं पे स्लोप 0। अगर हम इस वाले कर्व के लिए चेक करें तो कंटिन्यूसली जहाँ भी अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो हमेशा स्लोप क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम कह सकते हैं जो स्लोप है वो क्या है, ऑलवेज नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आया, अगर ये फर्स्ट वाला केस है तो हम सिंपली बोल सकते हैं डेट इज एफ डेस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, या तो नेगेटिव रहेगा या किसी पॉइंट पे इक्वल टू 0 अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं दैट इज अवर डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया जो एफ डेस एक्स था दैट इज लेस देन 0, वो कंटिन्यूसली क्या था, लेस देन 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कभी भी क्या है, स्लोप 0 अचीव नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे स्लोप 0 अचीव कर सकता है। तो ये बात समझ में आ रही है कि हम इसको तरीके से कैटेगराइज करेंगे फंक्शन को, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमारे पास 4 कैटेगरी बन गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रीफ करूँ आपको तो देखो इंक्रीजिंग के केस में 2 कैटेगरी बनी, ठीक है। फर्स्ट एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। इसको हमने बोला ओनली इंक्रीजिंग, इसको बोला हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कि वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग था, ठीक है। दूसरा जो हम बोल रहे हैं इधर से डिक्रीजिंग के केस में, यहाँ भी हमारे पास 2 कैटेगरी बनी, दैट इज अगर एफ डेस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो दैट मीन्स डिक्रीजिंग ओनली, और अगर एफ डेस एक्स लेस देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में चला गया, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको। तो चलो अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि हमें कुछ इंटरवल फाइंड करना होगा फंक्शन के लिए, अगर फंक्शन कम्प्लीटली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो चलो, तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, चलो कि हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो फर्स्ट साइकिल के लिए डिस्कस कर लेते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बेसिकली आप ग्राफ से भी कर सकते हो कि जस्ट ग्राफ ड्रॉ करो आप साइन का, और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्चुअली में हो रहा है नहीं हो रहा, स्लोप वाली चीज़ को हम विजुलाइज करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। तो अगर हम बात करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमें इसका प्लॉट बनाना है, ये 0 है, ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। तो फर्स्ट साइकिल क्या होगा, पॉजिटिव, सेकेंड साइकिल क्या होगा, नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा प्लॉट आ गया। अब बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा, दैट इज सिंपली पाई बाय 2 एंड दिस पॉइंट विल बी 3 पाई बाय 2, okay. So by this graph you can see from 0 to pi by 2 in this section, okay. If I draw with separate color from 0 to this section, the function is increasing, then from this point to this point 3 pi by 2 function is continuously decreasing, and from this to this 2 pi the function again start increasing. So we can make by observation simply the function fx equal to sin x के लिए इंक्रीजिंग वाला
इंटरवल में। तो वी कैन से कि फंक्शन 0 टू पाई बाई 2 में पहले इंक्रीजिंग था और यूनियन 3π/2 टू 2π। हम यहाँ इक्वल टू भी अचीव करा सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम, तो क्लोज ब्रैकेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग केस के लिए बताइए कहाँ से कहाँ तक इंटरवल आएगा। टेल मी। सिंपली वी कैन लुक फ्रॉम π/2 to 3π/2. So we have interval π/2 to 3π/2. Okay, this is our interval of decreasing, continuously decreasing function. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब इसे हम f(x) वाले मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है, स्लोप वाले मेथड से। तो हमारे पास जो फंक्शन था डेट इज f(x) इक्वल टू sin x। अगर हम इसका f(x) फाइंड करना चाहते हैं तो f(x) विल बी सिंपली cos x, ओके, isn't it? सब लोग बताओ आपको f(x) sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है या नहीं होता? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो, तो अब हम दो कैटेगरी बना लेते हैं, एक इंक्रीजिंग की और सेकंड डिक्रीजिंग की, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंक्रीजिंग के लिए तो हमें क्या चाहिए, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो f(x) लेस देन इक्वल टू 0। मैं इक्वल टू को अभी अवॉइड करके चल रहा हूँ बिकॉज मैं स्ट्रिक्टली के लिए, ठीक है, हम इन पॉइंट को क्लोज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, cos x जो है that should be less than 0, नहीं greater than 0 for increasing the case, that is our f(x), that should be greater than 0। और इस केस के लिए क्या मिलेगा, cos x should be less than 0। ये हमारे दो केस में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए 0 से 2 पाई के बीच में जब x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है तो cos x कहाँ पे पॉजिटिव है, cos x कहाँ पे नेगेटिव। इसको भी आप सिंपली ग्राफ की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। cos x का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई में, जो सिंपल ग्राफ है cos x का वो फॉर्म करो। तो सिंपल अगर हम cos x का ग्राफ बनाना चाहते हैं 0 से 2 पाई में, तो it will be look like this, okay, this point is our 2 pi, this point is our pi, and this is pi/2, and what is the value for this point, this point will be 3π/2, okay, so this is our 0। so now tell me where is the positive part of this graph, so this is simply positive part and this is also positive and this whole part is negative। so for increasing we need positive part, so positive part answer will be 0 to 2 pi/2 and 3π/2। so we can write for first case x belongs to 0 to pi/2 union 3π/2 to 2 pi, ठीक है। एंड सेकेंड केस डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास होगा x बिलोंग नेगेटिव पार्ट, दैट इज pi/2 to 3π/2, ठीक है। तो अब देखो, जो हमने डिफरेंशिएशन वाले मेथड से निकाला, चाहे हमने ऑब्जर्वेशन ग्लास फिजिकल मेथड से यहाँ से निकाला, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से हम निकालना चाहें। तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो आप इजीली सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट हर केस में हमारे पास क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होगा कि हम ग्राफ बनाएं, बट जब भी साइन कोस फंक्शंस इन्वॉल्व हो, कोशिश करो फंक्शन को इस तरीके से कन्वर्ज किया जाए कि हम एक ग्राफ ड्रॉ कर पाए। अगर हम एक ग्राफ बना पा रहे हैं प्रॉपर फंक्शन का तो हम इजीली इंटरवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब कुछ और क्वेश्चन किए जाए इसी पे बेस्ड, ठीक है।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई. Take your time and tell me, find the interval for increasing and decreasing and decreasing. हमें ये बताना है कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है. चलो आप अपना टाइम लो आराम से 1 मिनट के लिए, सॉल्व करो, ऐसे सोचो कि क्या अप्लाई करना है आपको, बेसिक चीज. देखो अब क्या होगा, आपके लिए ग्राफ बनाना डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये सिंपली एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स का कॉम्बिनेशन है. आप ये कॉम्बिनेशन इजीली ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन वाला मेथड ही फॉलो करना होगा. तो एफ डैश एक्स फाइंड करो पहले. फर्स्ट ट्राई टू फाइंड एफ डैश एक्स. ओके सो what is the value of f dash x? Tell me. Sign differentiation is cos x. What is the differentiation for x? That is minus 1. Okay, this is our f dash x. Now make our interval. So write the condition for first increasing and second for decreasing. ठीक है, तो हमें क्या बोला था भाई, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो वी नीड टू फाइंड आउट वेयर f dash x is greater than and equal to 0, and then function is decreasing, we need to find out where f dash x is less than equal to 0. okay, so most of the case में आपको आंसर पे फोकस करना है. अगर आंसर्स में इक्वल टू वाला केस दिया हुआ है दिया, ठीक है, हम मोस्टली केस में इसको ग्रेटर देन इक्वल लेके चलते हैं और यहाँ लेस देन लेके चलते हैं. ठीक है, इक्वलिटी वाले पॉइंट को हम किसी एक तरफ इंक्लूड कर सकते हैं ऐसे केसेस में. ठीक है, चलो तो अगर मैं फर्स्ट केस सोल्व करता हूँ, दैट इज cos x माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो हमें बताना है कि cos x जो है ग्रेटर देन 1, तो cos x किसी x के लिए ग्रेटर देन 1 होगा. cos x किसी भी x के लिए ग्रेटर देन 1 होगा. भाई cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? cos की मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज +1. ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर नो वैल्यूज ऑफ x cos x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, हम सिंपली ये बोल सकते हैं. तो दैट मीन हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग का कोई इंटरवल नहीं दे रहा है. ठीक है, जरूरी नहीं है हर फंक्शन में हमें इंक्रीजिंग बिहेवियर का कोई इंटरवल मिले. ठीक है, आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं करना है कि हमें ऑलवेज कि हमें इंटरवल मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, हमें नहीं भी मिल सकता है किसी केसेस में इंटरवल. अब अगर हम बात करें एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो दैट सिंपली मीन्स cos x minus 1 is less than 0. okay, that simply means cos x minus 1 is less than 0. ठीक है, तो we can say cos x is less than 1. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि cos x की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 1 से छोटी होती है या 1 के इक्वल अचीव कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x या तो लेस देन और इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू भी कंसीडर कर लें कि वो कांस्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम केस कुछ भी, बट वो cos x 1 से बड़ा नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, और वी कैन से इन रियल में भी बोल सकते हैं. ठीक है, अगर हमें जो इंटरवल दिया था तो ये पर्टिकुलर इंटरवल था. अगर नहीं भी दिया होता तो हम ये बोल सकते थे ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. अगर इंटरवल नहीं दिया होता तो ये तो जनरल बात आ गई ना यहाँ पे कि cos x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, इज लेस देन 1.
तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन दैट इज डिक्रीजिंग काइंड ऑफ बिहेवियर शो कर रहा है। तो हमारे यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो एफ एक्स था दैट इज साइन एक्स माइनस एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें कोई पर्टिकुलर इंटरवल नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 3x to the power 4 minus 8x cube minus 6x square plus 24x plus 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स के लिए। तो आपको बताना है इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, ठीक है। फाइन द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी में कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। यू नीड टू फाइंड आउट द इंटरवल whether the function is increasing for particular interval or decreasing for that particular interval. So try to solve, take your time. First find out f dash x. What is the value for f dash x? First you need to find out f dash x. What is the value of f dash x for this function? Okay, so let us try to solve. Our fx is 3x to the power 4 minus 8x cube 6x square plus 24x plus 7. That is our fx. So what will be the f dash x? F dash x will be 12x to the power 3 minus 24x square minus 12x plus 24, isn't it? Check, is there any calculation mistake in f dash x? Calculation mistake check करते रहना साथ साथ, ठीक है। Sometimes there may be some calculation mistakes. Okay, so now tell me what is the common factor from all this term? 12. Okay, so if you take 12 as a common, then our f dash x will be, this is x cube 2x square minus x plus this. Okay, so we need to make interval for increasing and decreasing. Okay, so first we need to make the interval for increasing, then we need to make interval for decreasing. So first condition, that we write for increasing case. Okay, so that simply means f dash x is greater than 0, which slope will be positive. Second, we need to solve decreasing case.
Okay, so that simply means f dash x is less than 0. Slope will be negative. Okay, so what is our f dash x? F dash x is 12. Here we have x cube minus 2x square minus x plus 2. That will be less than 0. No, greater than 0 for it. That will be greater than 0. Isn't it? Now tell me, can we remove this 12? Because if we take this 12 from this side, this will be get cancelled. Okay. So our final function will be x cube minus 2x square minus x plus 2 greater than 0. Okay. So if we take x square common from these two terms, then x minus 2. If we take minus 1 common from these two terms, x minus 2 greater than 0. So now final factorization, x square minus 1, x minus 2 greater than 0. If we factorize this term, x plus 1, x minus 1, x minus 2 is greater than 0. How to solve inequality? We have discussed in our inequality chapter. There are lots of problems we discuss on inequality. Okay, so you need to make a wave curve. So let's just try to make a wave curve. This is minus infinity and this is plus infinity. Okay, so represent the number of 0 on number line. So that will be our minus 1. This will be plus 1 and this will be plus 2. Isn't it? Okay, so now tell me what is the sign for 2 to infinity? How to identify sign for this interval? Take whatever the value in this interval like 5, 10, 6, put inside the equation and check the sign. If we take 10 in value of x, so this is positive and this is also positive. So we can say the whole interval is positive. If the power of each factor is odd, so we can change sign in alternate interval. Negative, positive and simply negative. Okay, so now we need to find increasing means f dash x greater than 0, that means positive. So our positive part is this and this, so we can say x belongs to minus 1 to plus 1 union 2 to infinity. Okay, can we say that? Okay, so if we this is the interval for increasing and we need to find for decreasing also. So our plot will be same every time. Okay, so now we need to concentrate on negative part. The negative part is minus infinity to 2. Look at this function, minus infinity to minus 1. Union, then 1 to 2. This is our negative part. Here the function is decreasing. So these are the interval for increasing and decreasing. These are our final answers. Okay. Are you getting this? Alright. So let us try to solve some more problems based on this concept. So next question is fx equal to 2 to the power x minus 1 into 2 to the power x minus 2 square. Okay. This is our fx. Okay, you need to find the interval for monotonicity of function of fx. Okay, so take your time, apply same concept and try to find the interval. Okay, please solve.
without solving question you are not going to get anything. Simplify this, find first f dash x. First you need to find f dash x. What is the value of f dash x? Tell me fast. Is there anyone who got answer? No. Why no? Oh, you are solving. You're taking too much time. Okay. So let's see how to solve this question. Okay. So our f dash x value is, so we write first fx. So fx is 2 to the power x minus 1, 2 to the power x minus 2 whole square. So we need to find f dash x. How to differentiate this function? By product rule. So this is our first function and this is our second function. If we write first function, that is 2 to the power x minus 1, then we need to differentiate second function. Okay, then we write second function as a constant, then d of dx. Okay, that's fine. All right, so now we differentiate this 2 to the power x minus 1. What is the differentiation of this term? Tell me. First, we need to differentiate with respect to power, that is power is 2, so 2 power x minus 2. Then we need to differentiate inside. So 2 to the power x differentiation is 2 to the power x into log 2. Okay. Plus this term is constant here as it is. And what is the differentiation for this? 2 to the power x log 2. Okay. So now tell me what is the common from these two factors? Log 2 and 2 to the power x. These two factors you can see first. So first take these two factors. Okay. So 2 to the power x log 2. What is left inside this factor? And this 2 multiplied by 2, and here this factor plus what is from this side 2 to the power x minus 2 whole square. Okay, this is outside. All right, now tell me what is the common from these two? What is the common factor from these two? So if we take common from these two factors, then 2 to the power x log 2 as it is, and this factor we can take common. Then 2 to the power x minus 2, what is inside? 2 into 2 to the power x minus 1, or here 2 to the power x minus 2. Now simplify this. So if we simplify this, 2 to the power x log 2, 2 to the power x minus 2. Okay, and here what will be this value? 2 into 2 to the power x minus 2, and here 2 to the power x minus 2. Okay,
So can you simplify this? Oh, okay, so this is 2 to the power x log 2 to the power x minus 2, and if we add these two factors, this is 3 into 2 to the power x minus 4. This is our final f dash x. So our f dash x we can write 2 to the power x log 2 to the power x, this is 2, minus 2, 3 into 2 to the power x minus 4. This is not point, this is for into, okay? Alright. So now for increasing and decreasing, we need to find interval where f dash x is greater than 0 and less than 0. So we write the condition for increasing. That is f dash x is greater than 0. Okay. For decreasing, f dash x is less than 0, isn't it? So what is our f dash x? This is our f dash x. 2 to the power x log 2, and factor is 2 to the power x minus 2. Next factor is 3 into 2 to the power x minus 4. This will be greater than 0. Okay, if we solve for 1, so we will get alternate interval for degree. Okay, so now tell me about all this term 2 to the power x log 2. Whether these are positive number or negative number. 2 to the power x is always positive or negative. This is exponential function 2 to the power x. So this is always positive. So we can say this term is positive and log 2, this term is also positive. So these two do not have any 0. So what is the 0 for this factor? X equal to 0. And what is the 0 for this factor? So if we simplify this factor, then 2 to the power, we get 2 to the power x equal to 4 by 3. Okay, so x value will be, what is the value of x? The x value will be our, if we take log at base 2, then log 2 4 by 3. So now tell me log base 2 4 by 3 is greater than 0 or less than 0? It's here we have 0 as 1 because this is 2. Okay, so here the x equal to 1. So we need to find out whether this is greater than 1 or less than 1. So tell me about 4 by 3. 4 by 3 is greater than 2 or less than? This is less than 2. So simply this term will be less than 1 because log 2 base 2 is 1. Okay. So if this is less than 2, then this whole term will be basically less than 1. Okay. So now represent 0 on number line. The first 0 is 1. Second is this log 2 4 by 3. So now tell me our positive interval. This is our positive and this interval is our negative and this is simply again positive. So can you write the interval now? Okay, so our increasing f dash x is positive, the positive interval, this is minus infinity and this is plus infinity. So we can write x belongs to minus infinity to log 2 4 by 3. Okay, union again 1 to infinity, isn't it? And for decreasing part, we can write x belongs to from log 2 base 4 by 3 to plus 1. Okay, these are interval for our increasing and decreasing. I think you are getting now how to solve this kind of problem. All right.
Okay, fine. So now try to solve some more problem. So try to solve this question. Find the value of a for which the function fx equal to x square ax plus 1 is an increasing function. Okay, we need to find the value of a for which the given fx is an increasing function. Okay, try to solve this. Try to solve this. Use same approach, f dash x approach, the slope approach. So, so we need to find f dash x first. So what is our f dash x? So fx is basically x square plus ax plus 1. F dash x will be 2x plus a. Okay. So for increasing f dash x should be greater than 0. So we can say 2x plus a should be greater than 0. Then we simplify this. Then x should be. Then now tell me how to find the x value. We get a value as greater than minus 2x. This is our entry. So now tell me, can you identify x value? No, we cannot identify x value. If some interval is provided to us, like say we have some interval, let's say we have to check for x belongs to 1 to 2, then we can find the a value for particular given value of x. If this is given, then if we substitute this, then our x value will be minus 4 to minus 2. Then our a value will be, like if we substitute this, the what will be interval for a? Interval of a from start from minus 4 to minus 2. This is minus 4 to minus 2. So now tell me which value you are going to select from these two. We need, this is always increasing. So we need to select threshold value. Okay, after if we select this value, then whatever the value between this interval is provided, then this function is always increasing. So our a value will be minus 2, not minus 4. Okay, so a value will be our minus 2. Okay, fine. So now try to solve some trigonometric problem based on this kind of question. Okay, so we have minus fx equal to minus x sine cube x plus 3 sine square x plus 5, and x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. Find the interval of monotonicity. Okay, solve this question.
First find out f dash x. What is the value of f dash x? Just find out f dash x. What is the value of f dash x for this particular question? Okay, fine. Fx is sin cube x plus so if we differentiate with respect to x, then minus 3 sin square x into cos x plus 6 sin x into cos x plus 0, isn't it? Now tell me the common factor from these two terms. What is the common from these two terms? Can you find out common? We can take sin x, cos x as a common and 3 as a common. So if we take 3 sin x and cos x as a common. So here we have minus sin x, here we have plus 2. Okay, so this is our f dash x. So we need to find the values of x where this is greater than 0 or less than 0. Find out the interval. Okay, so first case is for increasing. So for increasing f dash x greater than 0. For second case decreasing, f dash x should be less than 0, isn't it? So what is the value of f dash x? The f dash x is 3 sin x cos x, or can I write like this, 2 minus sin x? Okay, so this will be greater than 0 for increasing part. So now tell me about this factor. What is the sign of this factor? Can you identify the sign of this factor? What is the sign of this factor, this particular factor? If you say the sign next maximum value is +1 and minimum value is -1. So if you put maximum and minimum value, this factor will be always positive kind of. Okay. So this factor is positive, we can ignore this factor because the positive sign is not going to change anything in inequality, and there is no 0 from this factor. So we have left out, we can ignore 3 too because 3 is also a positive number. So left out factor are sin x cos x greater than 0. And what is the value of x? X belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay. So now tell me, from minus pi by 2 to plus pi by 2, what is the sign of this product? So let us break this interval. This is minus pi by 2, somewhere is 0, and this is plus pi by 2, isn't it? So if we check for this is our first quadrant, 0 to pi by 2. In first quadrant, sign is positive. If we take sin x into cos x,
this is positive, this is positive. So that simply means this whole term is positive. This whole term is here positive. Okay. For this particular interval, what is the sign? This is basically our fourth quadrant because we are going to negative sign. So minus pi by 2 to 0. Okay. So if we check the sign of sin x and cos x. So in this particular interval, sine is negative and cos x is positive. So what is the overall sign? So we get overall sign is negative. Positive into negative, negative. So we need to find where is the sin x into cos x positive. So for this interval, so we can write for increasing. X belongs to 0 to pi by 2, and for decreasing, x belongs to minus pi by 2 to 0. Okay. Okay. This is the sign for our increasing and decreasing interval. Simply. Okay. So whenever we have some extra factor, those factors do not provide any zero if they are positive or negative. We need to reduce our inequality basically. If we reduce our inequality, we can solve easily. Otherwise, the solving inequality will get complicated with time. Okay. I think you are getting this approach. All right. So now we need to solve few questions. So like increasing and decreasing is also asked in terms of invertible function. We discussed in inverse trigonometry. The whenever function is invertible, the function should be bijective. So what is the bijective function? Function is 1 1 and function is onto. If function is 1 1, that is function is strictly increasing or decreasing kind of function. So let us try to solve some question on that approach. Find the values of p if fx equal to cos x minus 2px is invertible. Function. Can you solve this? Just try to simplify. We have discussed this in inverse trigonometric functions. Can you solve? All right. So what is the condition for invertible function? I have written this. What is the condition for invertible function? Simply we say function is bijective function. And what do you mean by bijection or bijective? The bijective have two terms basically. This is the combination of two type of functions. First is 1 1 and second is onto mapping. We discuss all this mapping. Okay. So if function is 1 1 kind of function, then function should be either strictly increasing f dash greater than 0, or function should be strictly decreasing or less than 0. Okay. So we need to
make this function either strictly increasing or strictly decreasing. So we need to first find f dash x. So first we need to find f dash x. So what is the value of fx? What is the value of fx? So our fx is simply here cos x minus 2px, isn't it? If we differentiate with respect to x, then f dash x equal to minus sin x minus 2p, isn't it? Okay. So if we make this function increasing, first condition if we apply for increasing, that is f dash x greater than 0. Okay. So we simply say greater than 0. Okay. If we take minus sign common, then we can say sin x plus 2p less than 0. We can say 2p should be less than sin x. Now tell me what is the value of p? What is the value of p? So we can simply say p should be less than sin x by 2. Okay. So what is the range of this factor sin x by 2? If we consider the range of sin x by 2, let us look at here. This is left plus 1 by 2 to minus 1 by 2, isn't it? So this is plus 1 to minus 1. So now tell me, so what is the value of p? So p value will be less than minus 1 by 2. We take this threshold because after this is always less than this. Okay? Because this is the minimum value this can achieve. If p is less than this minimum value, then we can say this is always increasing. So this is the interval for. We can also include equal to if we need to. Okay, so we can also include this sign here because at equality there is no problem. All right. Okay. Second is if we consider this for decreasing. Let us discuss this side. If we discuss same case for decreasing, so less than 0, so we can say minus sin x minus 2p should be less than 0, isn't it? So if we take minus again common, then greater than 0. So we can say 2p should be greater than sin x minus sin x. Or we can say p should be greater than minus sin x by 2. Okay. So now tell me what will be the value of p. So what is the range of this factor now? Minus sin x by 2. This will be, if it put here minus 1, this will be get maximum plus 1 and this will be minus. So we need p. So our maximum value 1 by 2. So we can say p should be greater than 1 by 2. So these are the value for p. So if p is greater than 1 by 2 or p is less than 1 by 2, this function can be a invertible function. Okay. So we can write if p is less than minus 1 by 2 and p greater than 1 by 2. Okay. These are the values of p for which
fx is invertible function. Okay, so this is asked indirectly. The same approach you have to follow. You have to find if whether function is increasing and decreasing. So this is also a type of question that is asked in term of invertible function. You need to follow same approach in this kind of questions. Okay. All right. Okay. Sometimes question is asked based on number of solution using the f-x approach. Okay. So if write like fx equal to like x to the power 5 plus x to the power 3 plus let's say 15, this kind of equation, or we can increase degree like 15, okay, let's say 31, this kind of some odd and high degree group. Okay, you need to find the number of solutions of fx. Okay, solution means the number of zeros, the where fx is equal to 0. How can you solve this kind of equation? Can you solve this? Because we cannot factorize this kind of equation. There are lots of higher power involving in this kind of factors. So can we use this method of increasing decreasing? If we identify function is strictly increasing and decreasing, then we can say something about the roots or solution of the equation. If we identify the function is increasing and decreasing, then can we say something about the root of equation? Okay, so let first find out f dash x. So our f dash x value will be 15 x to the power 14. Okay, or let's include x here. Okay, so if we say that is plus 30 into x to the power 30 plus 15, isn't it? Okay, so what can you see about this f dash x, whether this is always positive or negative? Because these are even power, these are even power, so these are always positive. So we can say f dash x is always greater than 0. So if f dash x is always greater than 0, so we can conclude fx is an increasing function. What kind of function is it? A increasing function. So if this is increasing function, so we can say something about root, like function is increasing, and this is odd degree function. Sorry, this is odd degree function. If we put plus infinity, this is approaching to plus infinity. If we put minus infinity, this is approaching to minus infinity. So we can say at the minus infinity, this is approaching to negative side, and this is plus infinity. So if this is continuously increasing, then it must cut x-axis at some point, because it is going from negative to positive. So we can say from this conclusion, fx has, we can say fx has one solution. Or we can say fx is 0 at some x for x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, वो किसी ना किसी पॉइंट पे एक जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तभी वो नेगेटिव से क्या कर सकता है, पॉजिटिव जा सकता है. वी कैन से सिंपली this kind of equation by the help of differentiation, the one solution.
Okay, number of solution is one solution. Okay, now try to solve this question based on this same kind of approach. Fx equal to 310x plus x cube equal to, this is our equation, not fx. Okay, you need to find for x belongs to 0 to pi by 4. Okay, find the number of solution. Find the number of solutions. Can you find out number of solutions? So first we need to make this as fx, some function. So can we write fx equal to 310x plus x cube minus 2, or what will be the value of f dash x? 3 sec square x, 10x differentiation, and this will be 3x square. So what will be the conclusion from these two terms about f dash x? From 0 to pi by 4, we can say f dash x is always greater than 0. Can we say that f dash x is always greater than 0? F dash x is always greater than 0. Okay, so we can say function is increasing kind of function. Function is increasing kind of function. Now check the value at endpoint. What is the value at f0 and f pi by 4? Okay, see whether this function is intersecting with x-axis for this given interval, because function may be increasing, so there may be outside interval. Okay, so we need to find f0. If we put 0, 0, that will be minus 2. This value will be minus 2. If we put 0 here. Okay, if we put pi by 4, so this will be 3, and this will be pi by 4 cube minus 2. So this is 1 plus something pi by 4 cube. So we can say this is positive ultimately. So we can say the function at 0, and this is pi by 4. At 0, function is somewhere negative, that we can say here somewhere minus 2. Okay, at pi by 4, function is some 1 plus something, this is some positive. So that means the function is going to intersect somewhere, because this is increasing kind of function. We can say one root or one solution between 0 to pi by 4 for this given function. Now I think you have a clear idea about how to find the solution using the f dash x. This is not going to work every time, but if question is designed on this pattern, then you can identify the solution. Sometimes the question is asked on that pattern. Okay. Now discuss few things about maxima and minima. Okay, this is about increasing and decreasing. Now we need to discuss about maxima and minima. Okay, so what is the literal meaning of maxima and minima? How do you identify the whether function is maximum or minimum? Look, we have two graphs. Let's suppose there is a function like this, and in second case there is a function like this. Okay, so here at some point this is a peak value. Let's suppose x equal to a, and here this is x equal to. If we check at
in the neighborhood, that point is a plus h, and this point will be a minus h for this given interval h, isn't it? Okay, so this is similarly a plus h, and this is a minus h. If we check this value, this is f of a, and this value will be f of a plus h, and this value will be f of a minus h. Okay, similarly here, this is f of a plus h, a minus h, isn't it? So if we check for this case, we can say f of a value is greater than f of a plus h, and f of a is also greater than f of a minus h. We can say the f of a value is greater than its neighborhood value. Okay, but in this case, we can say f of a value is less than f of a plus h, and f of a value is less than f of a minus h. So we are checking the value of a function in its neighborhood. So if function is greater than its neighborhood value, then we can say function is achieving some maximum value. Okay, if function is less than its neighborhood value, then we can say function is approaching to minimum. Okay, so this is the basically we can say at x equal to a, function is approaching at maximum, and in this case we can say at x equal to a, function is approaching at minimum. Okay, so this is the general way, but in terms of calculus and slope, how do you identify whether the function is some maximum or minimum? Okay, so let us make a plot like this. Okay, like this. Okay. Okay, let us check for this point. This is some point A. This is, let's say, A. This point is B. This point is C, and this point is D. Okay. So now tell me, what are these point A, B, C? These are our critical point. Okay. So what is critical point? Can you define a critical point? Critical point have some criteria. So there are 2 points. Either f dash x is equal to 0, or f dash x is not defined at that point. We say it simply critical point. Okay, the critical point is a point in the domain of a function where either the function is not differentiable or f dash x equal to 0. So here f dash x equal to 0 we can say, because the slope of tangent at these points is parallel to x-axis. So whenever slope is parallel to x-axis, that simply means f dash x equal to 0 at all these points. So we can say, so A, B, C and D, x equal to, okay, all these points, for x equal to are our critical point, because are our
critical points, because here f dash x equal to 0. Okay, but at every f dash x equal to 0, if you look at the graph, there is somewhere some minima, some maxima. How do you identify at the which critical point is maxima or minima? So first step is to identify critical point. Then if we look at the pattern of slope, here the slope is positive and here the slope is negative and here the slope is 0. Okay, but if we look at this point, at this point, at this point the slope is negative and this point slope is positive, and at this point slope is negative. We are talking about slope. Okay, slope of tangent. We are talking about slope of tangents. Okay, so if you look at a point, the slope of tangent from turning from positive to negative at some point 0, then it's negative. So what is the slope of tangent? Slope of tangent is simply our f dash x, or we can say dy by dx of a function. Okay, so that means slope of tangent is decreasing kind of function, because slope of tangent starting में positive था and then end में negative हो गया, तो we can say the function of slope is itself a decreasing function. Okay, so for first point at x equal to a, if we analyze, let us break this picture like this, and this is the point A, and here slope is positive, here slope is 0, and here slope is negative. Okay, so we can say slope of tangent is decreasing because it's changing from positive to negative. We can say that. Okay, so if some function is decreasing, that means slope of tangent को अगर मैं function की form में represent करूँ, if I represent in form of function, then I can say dy by dx, that is our slope of tangent. Okay, so अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेट मीन इसका अगेन डिफरेंशिएशन, डेट मीन f dash x of this function will be less than 0. So we can say that for decreasing case, what is the differentiation of this? That implies to dy by dx square should be less than 0. Okay, so we can say if dy by dx square is less than 0, that means slope एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो डेट मीन दिस पॉइंट इज एट मैक्सिमा. Okay, so we can say for at x equal to a, for maxima, if first dy by dx equal to 0, वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, एंड सेकेंड डेरिवेटिव dy by dx square is less than 0. Can we say that for maxima? Okay, now try to analyze at the minima what is happening at the minima point. Okay, so let us look at this point. This is minima at the. Okay, so what is the pattern of slope at this point? So we can say here the slope is negative, this slope is 0, and here the slope is positive, slope of tangent. Okay, so if I break this picture and draw separately at x equal to d point, so this picture will be look like something this. Oh, sorry. So this is our d point. Let's go. Okay. So if we talk the pattern of slope, here slope is negative, here the slope is 0, and here
the slope is positive. So slope is changing from negative to positive. Okay. So we can say the slope means slope of tangent. Slope of tangent is changing from negative to positive. That means we simply say slope of tangent is increasing function. Can we say that? Can we conclude this from this 2 point? Yeah, of course. Okay. So if we represent in terms of differentiation, if slope of tangent is increasing function, so we can conclude dy by dx square should be greater than 0. Okay, so we can say for x equal to d, okay, for x equal to d, first dy by dx equal to 0. That is for critical point. And with this condition, if we have dy by dx square is greater than these two conditions. So we can simply say at x equal to d, the point of minimum. Okay, so this is the pattern to find maximum and minimum. Now question arises, how do you find maximum and minimum, global maximum and local maximum? How do you identify between these maxima and minima, which one is global and which one is local? How do you identify this? So to identify local and global maxima minima, to identify which one is our local and which one is our, so if we have given some interval, let's suppose x belongs to some interval, let's say L1 to L2. Okay, we need to find in L1 to L2 which one is our local maximum and which one is our global maximum. Let's suppose we have some graph like earlier. Like this. Okay. So here too many points. So let's suppose this point is A, this point is B, this is C, this is D, and this is E, and this is F. These are the points where our slope of tangent is 0. So our first step will be find critical point. So our critical points are x equal to A, B, C, D, E, and F. These are our critical points. Okay. Second step is to identify maximum and minimum point. So if we separate from this graph, the maximum point will be A, C, and E. And if we separate from this graph, the minimum point will be B and D. Okay, for x equal to B and D, and x equal to A, C, and E. These are our maximum. Okay. So now we need to identify for global maximum. Okay. So for first point is for global maximum. If we talk about global maxima, so our global maxima will be simply the maximum value of f of A, f of C, f of E,
and two endpoints value. Look at the endpoint value as well, L1 and L2. What will be the maximum from all these points? That will be our global maxima. All other points will be local maxima. Okay. Are you getting my point? How to find global maximum? So from all these values, so second, you need to find global minima. Global minima means simply if we have all points of minima, where is minima? Let the minimum value of f of a, f of b and d, first b and d, then endpoint 2, L1 and L2. And what will be the, if from all these values, the value that is minimum of all these values is our global minima, and all other value will be local minima. Okay, isn't it? Are you getting my point? How to identify local maximum and global maximum? Okay. So this is the approach we are going to focus on maxima and minima. Now you might ask me if, sir, dy by dx is 0, because we considered the two cases, only greater than 0 and in second case less than 0. Okay, here is this greater than 0 and less than 0. If this dy by dx is equal to 0, what we are going to do then? If in third case, that is, if at some critical point dy by dx equal to 0 and also equal to 0, then we need to find third derivative. If this is non-zero, then the point x equal to x1, we expect the critical point, is point of inflection. The point of inflection. Okay. How do you identify the point of inflection? Point of inflection simply means the curve changing our convexity, concave to concave. Okay, simply that. Okay, we will discuss more in when we are going to discuss questions based on all these things. Okay, I think, are you getting my point up to this? Maxima, minima, and point of inflection in third case. If we again have this is 0, then we apply for nth derivative test. Okay, this is our second derivative test basically. If this is again 0, third derivative is again 0, then we need to apply nth derivative. We need to repeat the same pattern from first, second, third derivative. Okay, and same cycle. Okay, fine. So now try to solve few problem based on maxima, minima. Okay. Let us discuss the problem we are discussing.
quadratic equation. Let's suppose we have some quadratic equation fx equal to ax square bx plus c, where a is not equal to 0. Then find maxima and minima. We need to verify with the help of calculator that we discussed in our quadratic equation chapter. Okay, fine. So what is our f dash x? So our f dash x will be 2ax, sorry, 2ax plus b. Okay, so for critical point, f dash x should be equal to 0. Okay, so if we find critical point, then 2ax plus b equal to 0, then our x value will be minus b by 2a, isn't it? Okay, so now tell me what is the maximum or minimum value. That is depend on our a value, whether this a is positive or negative. So we have fx equal to ax square bx plus 6. Then f of minus b upon 2a will be a minus b upon 2a square b minus b upon 2a plus c. Okay, if we simplify this, then a b square by 4a square minus b square by 2a plus c, isn't it? If we take LCM, then what will be the LCM? The LCM value will be 4a square. Okay, if I cancel this, then LCM will be 4a simply. Okay, then this will be b square. This will be minus 2b square, and this will be 4ac. So if I simplify this, then I got f of minus b by 2a is equal to minus b square plus 4ac. Can you identify this expression? If I take minus as a common, can I write b square minus 4ac by 4a? What is the value of this expression? This is d, discriminative. This is d, b square minus 4ac for a quadratic equation, isn't it? So if we substitute this, then minus d by 2a value will be minus d by 4a, isn't it? That is our maximum minimum value. Okay, now it's depend on a value. If a is greater than 0, then our graph will be like this, and this is our minimum value, and maximum value will be infinity. So we can say the minima is minus d by 4a at x equal to minus b by 2a critical one, and maxima will be tends to plus infinity. Maximum value will be tends to plus infinity. So we can write in form of range. The range will be minus b by 4a to plus infinity, isn't it? Okay. If a value is less than 0, then we can say the graph will be like this. So this is our maximum value. Okay, so max, we can write our minimum value will be tending to negative. We can say minus infinity to minus d by 4a. Okay, this is our maximum value. So maximum will be minus d by 4a at minus d by 2a bar. Okay, we have discussed this in quadratic equation. Now we can verify with the help of this maxima minima concept. Okay, that's fine. All right.
Okay, fine. Let us try to solve few questions based on maximum. Okay, so let us. I have a question. Fx equal to, let's suppose, 2x cube minus 3x square minus 12x plus 5 for x belongs to minus 2 to 4. Okay, and you need to find maxima and minima. Okay, local and global. Then range of function. What is the range of this function? You need to find this. Okay, so first find out the critical point. Okay, if you find out critical point, what is the critical point? F dash x equal to, this is 6x square minus 6x minus 12. Okay, if I take 6 as a common, then, oh sorry, x square minus x minus 2. Okay, can you factorize this to find critical point? That means equal to 0. Okay, so x square minus 2x plus x minus 2 equal to 0. Then x minus 2 and x plus 1 equal to 0. Here x equal to 2 and x equal to minus 1. Isn't it? Okay, these are our two critical points. Whether these points lying inside the given interval minus 2 to 4. Yeah, these 2 points are lying inside this interval. Okay, now we need to find double derivative f dash x. What is our double derivative? If we differentiate again this equation, that will be 12x minus 6. Okay, so can you identify at x equal to minus 1 and at x equal to plus 2? What is the value of these are our two critical points. Okay, now we need to identify the sign of double derivative. So f double dash 2 at minus 1 will be minus 12 minus 6, that is we can say minus 18, that is less than 0. So we can say double derivative f double derivative minus 1 is negative. Okay, at x equal to 2, what is the value of f double dash x 2? 12 into 2 minus 6, isn't it? We put simply 2 here. Okay, so this is 12 minus into 24 minus 6, that is 18. So we can say f double dash 2 is greater than 0. So what will be the conclusion? So we can say at x equal to minus 1, we have less than 0. This point of maxima and this is point of minimum. Okay, so now we need to identify global. How to identify global? For global, we need value at endpoint 2. What is the value at endpoint? Endpoint is f of minus 2 and f of 4. If we calculate value at these 2 points, what will be the value at these 2 points? We simply put the value in the function, that is function is 2 into minus 2 to the power 3 minus 3 to x square minus 12 into minus 2 plus 5. Simply 2 into 4 cube minus 3 into 4 square minus 12 into 4 plus 5. If you calculate all these together, then you have to compare which one is maxima and which one is minima. Okay, so can you calculate this value? This is minus 8, that is minus 16, minus 16 or minus 12, minus 16
minus 28 minus 28, this will be plus 24 plus 5. So we can say this is ultimately 1 value, isn't it? If we calculate this value, 128, this is 48, this is plus 8. So we can say 128 plus 5 minus 96. So 133 minus 96. So how much this? 6. This is approximately 47, isn't it? So if we find global maxima, so we need to find maxima of critical point values maxima, that is f of minus 1 and f of minus 2 and f of 4 maximum value. Okay, or if you need to find global minima, then we need to find minimum of, where is minima, f of 2. So f of 2 and endpoint value minus 2 and 4. Can you check these results for yourself? Okay. Okay. Okay, let us end this session today. So we will discuss more problem on tomorrow session. Okay, we will discuss few questions on maxima, minima, some practical problem next. We discuss theory part here. Okay, so just now try to revise all this concept. Bye bye.